Exercise 12.2 of chapter 3-dimensional geometry. Question number 1 is find the distance between the following pairs of the points. There are 4 questions. Okay. We can find the simple formula of distance. There are the 2 points. The distance formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1. यही फॉर्मूला चारों में लगेगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x2 माइनस x1 तो ये होता है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2. ओके ये पॉइंट्स है. तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर y2 minus y1 3 minus 3 whole square and 1 minus 5 whole square. z2 minus z1 4 minus 2 2 square plus 3 minus 3 0 and 1 minus 5 minus 4 whole square. It is equal to the 4 plus 0 plus 16 under root 20. Root 20 we can write 2 root 5 unit. This is the distance between these 2 points. Okay. Same second is minus 3 7 2 and 2 4 minus 1. Using the same formula and distance equal to मैं direct value put करते हैं x2 minus x1. It means 2 minus minus 3 whole square plus y2 minus y1 4 minus 7 and the third minus 1 minus 2 whole square z2 minus z1. It is equal to the 2 plus 3 5 square 4 minus 7 minus 3 square plus minus 3 square equal to 25 plus 9 plus 9 25 plus 18. 25 plus 18 is equal to the root 43. This is the distance between these 2 points minus 7 minus 3 7 2 and 2 4 minus 1. The third one is minus 1 3 minus 4 1 minus 3 4. इन पॉइंट्स को हम लोग इसको ए पॉइंट भी मान सकते हैं और ये बी. अगर तो हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ऐसे डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट सेम x2 माइनस x1. अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1. Next minus 3 minus 3 and third is 4 minus minus 4 z2 minus z1. Simple. 1 1 1 1 plus 2 हो गया 2 square minus 6 square and 4 plus 4 8. 4 plus 36 plus 64. It is equal to the root 104. इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 4 इंटू 26. It means 2 root 26. Next fourth one is 2 minus 1 3. Point is this. Suppose this point is P. And Q point is minus 2 1 3. Okay, find the distance between these 2 points. PQ equal to under root x2 minus x1. x2 is minus 2, x1 is 2. Same y2 is 1 minus 1 whole square and third is 3 minus 3
equal to the minus 4 square, 1 plus 1 2 square plus 0 square, 16 plus 4 20. So we can write 20 को 2 root 5. 4 into 5 20. Okay. Question number 2. The question number 2 is show that the points minus 2 3 5, 1 2 3 and 7 0 minus 1 are collinear. These are the 3 points. Okay, show that these points are collinear. Suppose this point is P, second Q and R. को show करना है PQR is a straight line. So first we have to find the distance between PQ. Same formula use करेंगे. x2 minus x1, 1 minus 2 minus 3 plus 3 minus 5 whole square. 1 plus 2 3 square minus 1 square, 3 minus 5 minus 2 square, under root 9 plus 1 plus 4, it is under root 14. Next QR, same formula, 7 minus 1 whole square, 0 minus 2 whole square, minus 1 minus 3, it is equal to the 6 square minus 2 square and minus 4 whole square. 36 plus 4 plus 16. It is equal to the root 56. So we can write 2 root 14. Okay. 4 common लेंगे. 4 into 14. So 2 under root 14. Next PR. Find the distance between P and R. Same formula, x2 minus x1, 7 minus 2 minus 2 whole square plus 0 minus 3 and third minus 1 minus 5 whole square. It is equal to the 7 plus 2 9, 9 square is 81 plus minus 3 square is 9. It is equal to the 36. Now add 90 plus 36 is 126. तो ये हो जाएगा 9 रूट, इसको हम लोग लिखेंगे 9 into 14. It means 3 root 14. 3 root 14. अब देखिए PQ plus QR equal to PR. PQ plus QR इक्वल टू PR है कि नहीं. रूट 14 प्लस 2 रूट 14 3 रूट 14 और ये भी 3 रूट 14 है. तो PQ प्लस QR इक्वल टू PR. देयरफॉर पॉइंट्स PQR आर collinear. PQ and R points are collinear. Question number 3. Verify that 0 7 minus 10 1 6 minus 6 and 4 9 minus 6 are the vertices of isosceles triangle. In the same second में prove that right angle triangle and third in the parallelogram. Isosceles triangle prove करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 sides equal. Okay. Suppose this is a point A, point B and this point is C. So first we have to find the distance between AB. By same formula, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square and माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +10 होल स्क्वायर. ठीक है. इट इज इक्वल टू द 1 square is 1, 6 minus 7 minus 1 square is 1, minus 6 plus 10 यानी 4 square is 16. It is equal to the root 18. Root 18 means 9 into 2. So we can write 3 root 2. AB equal to 3 root 2
unit. Same find BC. 4 minus 1, 9 minus 6. And last is minus 6 minus 6 means 6 plus 6. Minus 6 plus 6, 1. 4 minus 1, 3 squares. 3 square plus 0. Root 18. 3 root 2. तो टू साइड्स तो इक्वल हमको दिख गई, लेकिन हमको थर्ड साइड भी देखना पड़ेगा AC, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो गई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. AC में 4 minus 0 होल स्क्वायर, 9 minus 7 whole square and minus 6 minus 10. This is the formula. x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. 4 square 16. 9 minus 7, 2 square is 4. Minus 6 plus 10, 4 square is 16. Under root 36. 6. In which AB equal to BC. AB equal to BC. So therefore it is an isosceles triangle. Isosceles triangle because two sides are equal. Same next one is, these are the 3 points. Prove that it is a right angle triangle. Suppose there are 3 points A, B and C. First we have to find the AB. AB is minus 1 minus 0. x2 minus x1. 6 minus 7 and 6 minus 10 whole square. 1 plus 1 and 16. 6 minus 10, 4. 4 square is 16. It is equal to the root 18. BC. Minus 4 minus 1 whole square. 9 minus 6 whole square. And third is 6 minus 6. It is equal to the minus 4 plus 1. Yani minus 3 square is 9. 9 minus 9 plus 0. It is also equal to root 18. And third find AC. Minus 4 minus 0. 9 minus 7. And 6 minus 10. Whole square. It is equal to the 16. 4, 16. Root 36. So we can say that AC square equal to 36. AB square 18 and BC square 18. इसका मतलब क्या हुआ कि AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Therefore it is a right angle triangle. Okay. Same the third one. There are 4 points. Prove that these are the following points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. Okay. The parallelogram means we have to find the distance between two lines. First AB, BC, CD and then AD. So I am finding first AB. The formula is x2 minus x1. Yani 1 minus 1 whole square. By 2 minus 1 minus 2 whole square. And third is 5 minus 1 whole square. It is equal to the 2 square is 4. Minus 4 square is 16. 16. It is equal to the root 36. Root 36 means 6 units. Okay.
Now find BC. BC 4 minus 1 whole square minus 7 plus 2. जब -7 से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +2. -7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर. It is equal to the 4 minus 1 is 3. 3 square is 9. -7 to -5 25 plus 9. It is equal to the root 43 units. And the third AB, BC, CD. CD. CD means 2 minus 4 whole square minus 3 plus 7 and 4 minus 8 whole square. So 2 minus 4 is -2 square is 4. 4 square 16. 4 minus 4 square is 16. It is also equal to the root 36 means 6 units. Last side AD. Okay, AD. Here is the D point. 2 minus minus yani +1. 2 plus 1 whole square. Y2 minus 1 -3 minus 2. And the third is Z2 minus Z1 means 4 minus 1 whole square. Two plus 1 3 square is 9. Minus 5 square is 25 and 9 under root 43. Okay. The opposite sides are equal. It means देखिए AB equal to CD and BC equal to AD. यहाँ लिखेंगे opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Therefore, the following vertices are the vertices of parallelogram. Okay, the following vertices are the vertices of a parallelogram. Next, the question number 4. Find the equation of the set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1. Here are 2 points. Suppose this point is A and point P. Find the equation of the set of points. Suppose a point P which is equidistant from these 2 points. It means AP equal to PB or the AP square equal to PB square. तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हम नहीं लगाएंगे, सीधा सा बनेगा x - 1 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर एंड z -3 होल स्क्वायर इक्वल टू सेम x -3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर एंड z +1 होल स्क्वायर. Now opening the squares of this term. X square minus 2x plus 1. Y square minus 4y plus 4. And Z square minus 6Z plus 9. Same. X square minus 6x plus 9. Y square minus 4y plus 4. And Z square plus 2z plus 1. Now cancel x square, y square and z square from both the sides. Okay. And 1 is also cancelled by this one. 9 is also cancelled by this. And 4 cancelled by 4. So just remaining terms are minus 2x, minus 4y, minus 6z. Okay. And this side minus 6x minus 4y plus 2z. So minus 4y also cancel. Minus 2x plus 6x minus 6z minus 2z. The equation is 4x minus 8z equal to 0 or 4x minus 2z equal to
0. Question number 5. Find the equation of the set of points P, the sum of whose distance from A 400 and point B minus 400 is equal to 10. Let the point P, whose coordinates are x, y, z. Okay. The sum of the distances from point P यानी PA plus PB equal to 10. Okay. P से इन दोनों की डिस्टेंस का सम इक्वल टू 10. तो PA इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1. इट मीन्स x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर. दिस इज द इक्वल टू द PA और द AP. नेक्स्ट सम ऑफ दिस पॉइंट PB यानी x प्लस 4 हो जाएगा. इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 10. ओके, ये गिवन है. अब सॉल्व करेंगे तो इधर हो गया अंडर रूट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इधर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स a स्क्वायर इज 100 प्लस b स्क्वायर इज x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू 10 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 10 20. नाउ सॉल्व. नाउ y square plus z square cancel out. Now expanding the x square minus 8x plus 16. इस 100 को इधर लाएंगे माइनस 100 और इधर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिंपल x स्क्वायर कैंसिल 16 कैंसिल 8x इज माइनस 16 x माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. टेकिंग माइनस 5 कॉमन बोथ साइड माइनस 4 तो इट इज इक्वल टू द 4x प्लस 25 इक्वल टू 5 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. माइनस 4x से कैंसिल किए हैं. अब फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो वी गेट 4x प्लस 25 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर multiplied by 25. Now 4x plus 25 whole square is 16x square plus 200x a square plus 2ab plus b square means 25 square is 625. Now 5 square is 25 in bracket x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square. Okay, 16x square 16x square minus 25x square minus plus 200x minus 25 into 8 200x both side 200x plus
16 into 25 plus minus 200. 25 into 16 is 400 minus 25y square minus 25z square equal to 0. So 16 minus 25 is minus 9x square. 16 minus 25 minus 9x square minus 25y square minus 25z square. 200x cancel and 625 plus 625 here. 600 equal plus 225 equal to 0. Okay, taking minus common, we get x square plus 9x square plus 25y square plus 25z square. माइनस कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 225. माइनस होगा तो आंसर आएगा. द इक्वेशन इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 225, which is the required equation.